supposed to start with alkynes today, but I've already told you about alkynes that this is a third family and must contain a carbon-carbon triple bond. Remember, the triple bond has to be in between two carbon atoms and not any other atom, right? The simplest member is ethyne. How can we come up with this formula? Remember, something that is not written in this part of the book but has been a part of past paper is its general formula. The general formula for alkynes is CnH2n plus 2, sorry, my bad, 2n minus 2. And you might want to write that down on your book, as that's not a part of the book. Okay, this way you will be able to get the formula of any specific number of carbon atoms in this family. Okay. Yes, sir. What we do next is we tell you that ethyne is also known as acetylene, and the only use is it's a reactive gas and can react with oxygen for building torches. This simple reaction, C2H2 plus oxygen, of course excess of it, can give us carbon dioxide plus water, and it can give out so much heat that the temperature of this can go as high as 2000 degrees centigrade, which is good enough to melt iron, hence welding. I hope you understand welding means connecting two pieces of iron at such a high temperature that they both melt and can easily be mixed. And you can literally solidify them after a few seconds. Okay. This equation has been a part of past papers. Can you take some time out to balance it up? Now you know that, and it also gives the similar product as the previous alkenes and alkanes when there is excess of oxygen and the combustion reaction occurs, right? This is as much as we are supposed to study alkynes at this point. Any more than this is basically not the requirement of syllabus, so this is good enough. Let's move on. Okay. Now, there are some practices for the compounds over here, so you can always try naming them, except for the E part. In fact, you can name that too. मैंने पहले practice करवा दिया. I hope ये सारे आपसे आसानी से हो जाए. Let's talk about chemical reactions of alkanes. Alkanes are rather unreactive compounds. Alkanes are so much unreactive that alkanes are unaffected by acids, alkalis. Alkanes are even unaffected by oxidizing and reducing agents. Okay? However, they can go with combustion reactions. मैं पहले combustion discuss कर चुका हूँ alkanes की, but there is a certain type that we still need to discuss. ये combustion reaction जिसमें carbon dioxide और water produce होता है, ठीक है? ये complete combustion है. ये sufficient oxygen supply में होता है. However, there is another kind. If the air supply is limited, हमारे पास oxygen less है, poisonous or toxic gas carbon monoxide can be formed. ये incomplete combustion कहलाती है. This is a product of incomplete combustion. Now, this kind of reactions are common, have been common in past papers. चाहे complete combustion हो, चाहे incomplete combustion हो, दोनों तरह के reactions past papers में आए हुए हैं, ठीक है? उनको complete करना, उनको balance करना एक common activity है, right? Now, why is carbon monoxide toxic? Carbon monoxide इसलिए toxic होती है क्योंकि interfere करती है transport of oxygen के साथ. Remember, हमारी body में blood oxygen को transport करता है, and in that red blood cells. Now, the red blood cells are capable of transportation because of a specific substance known as hemoglobin. That's a part of red blood cells because of which the red blood cells are red. ये एक transport protein है, ये oxygen को carry करता है lungs से to all the cells of the body and then carries back from all the cells of the body carbon dioxide back to lungs. उसी की वजह से हम oxygen और carbon dioxide को inhale और exhale कर रहे होते हैं respectively. ठीक है? Hemoglobin बहुत strongly bind कर सकती है carbon monoxide के साथ, because of which बहुत सारे लोग सिर्फ carbon monoxide poisoning की वजह से मर जाते हैं हर साल, और वो poorly serviced gas fires होती हैं. आप actually क्या करते हैं?
कि आप जो है वो फायर को एक स्पेसिफिक एरिया में ब्लॉक कर देते हैं, एयर के अंदर ऑक्सीजन आहिस्ता आहिस्ता इनसफिशिएंट होती जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्चुअली टॉक्सिक। ये स्टार्ट तो करती है स्लाइट हेडेक से, then it causes dizziness, then it causes unconsciousness, and finally you die in about 30 minutes because of asphyxiation. Asphyxiation का मतलब होता है दम घुट के मर जाना। बेसिकली हवा में इतनी का ऑक्सीजन होती ही नहीं है कि वो आपकी लाइफ को सस्टेन कर सके, या आपके हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सारे के सारे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड हो चुके होते हैं, तो वो ऑक्सीजन को पिक करने के काबिल नहीं रहते। ठीक है, हम कॉमनली इससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम कार्बन मोनोऑक्साइड पे बेस्ड डिटेक्टर्स अपने घरों में लगाते हैं। A diagram which is given on this page, this is actually a carbon monoxide alarm. ये इसी पर्पस के लिए होता है कि अलार्म रिंग करे और हमें पता चल जाए कि due to some incomplete combustion we have more carbon monoxide than what we actually can bear. ठीक है, incomplete combustions particle carbons के भी प्रोड्यूस करती हैं। This single line has been actually a part of equation in previous paper 2019 और 20 के papers में उन्होंने इसे manipulate किया। Now take a look and try balancing this one out. Now you are familiar कि हम किसी भी alkane को लेकर उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और हम उससे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे in case of a limited supply, but at the same time it produces particles of carbon, so ये pure carbon भी साथ प्रोड्यूस कर सकता है। इस तरह के रिएक्शंस, ठीक है, या another type of reaction would simply be producing just carbon and water। ठीक है, दो इस तरह के reactions कम होते हैं, but they have been a part of past papers where this carbon particles are soot, हम इसे soot भी बुलाते हैं, यहाँ पर mention भी किया हुआ है। ठीक है, तो ये equations में आए हुए हैं। The equations are then balanced slightly differently, but you should be familiar, ये equations complete करने के लिए नहीं आती, सिर्फ balance करने के लिए आती हैं, and I think you would easily be able to do it. Am I right? Yes, sir. Okay. Now, soot can glow yellow in heat of a flame. That's why we are capable of seeing this kind of yellow flame. Okay. It's also shown in the diagram for a clear idea. Soot yellow show karta hai. Let's move on to the next page then. The other kind of reactions are substitution reactions. Before I move on, let me explain what a substitution reaction is. Alkanes, alkynes, in all these three cases, hydrocarbons as a whole are actually compounds that are based upon carbon when it can bond with hydrogen. Methane is the simplest of them. The formula of that is CH4. Now it has 4 hydrogen atoms, all singly bonded to carbon. Substitution is a reaction in which we take one of these hydrogen out, and then in place of that hydrogen, we can put in any other atom. That atom can be a halogen, chlorine put kar le, fluorine put kar le, bromine या iodine put kar le, halogens put kar le, oxygen या OH, alcoholic groups put kar le, कुछ भी और अगर इसको रिप्लेस कर लेता है, let's say क्लोरीन इसे रिप्लेस कर रहा है, then this would be substitution reaction. A substitution reaction is a reaction in which another atom or a group of atoms can displace the hydrogen present in the hydrocarbons or organic compounds. Substitution reactions alkanes में काफी common है. Actually, ये photochemical reactions है. Remember, chapter 7 में हमने photochemical reactions पढ़ा था. The chemical reactions which are initiated by light, such as photosynthesis. आप जानते हैं photosynthesis light से initiate होता है, sunlight से, और वो भी एक chemical reaction है. Just like that, this one is a chemical reaction. The reaction of methane with chlorine in the presence of sunlight. You can see it forms chloromethane and it also gives you hydrogen chloride gas. ठीक है? So sunlight के presence में हमारे पास chloromethane बन रही है. This one is chloromethane. आप notice करेंगे it has 1 carbon, 3 hydrogen and 1 chlorine. So यही reaction मैंने actually आपको show किया. ठीक है? Plus जो एक hydrogen यहाँ से निकलता है substitution में, वो HCl form कर लेता है when reacting with this chlorine atom. Method of chlorine react करते हैं in the presence of sunlight, actually ultraviolet light.
अल्ट्रावायलेट लाइट स्प्लिट कर देती है क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट एनर्जाइज्ड एटम्स में। ये एटम्स फिर मीथेन के अंदर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन एंड हेंस द नेम ऑफ द रिएक्शन आर substitution reaction. But this doesn't just happen to one hydrogen. अगर आप फर्दर क्लोरीन डालते जाएंगे, ये भी डिस्प्लेस हो जाएगा, इसकी जगह पे भी क्लोरीन आ जाएगा, ये भी हो जाएगा, इसकी जगह पे भी, and it would keep on displacing until it has displaced all of the hydrogen atoms. Take a look. ये पहला प्रोडक्ट है जो मैंने बनाया था। एक और हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा। एक और हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा। सारे हाइड्रोजन निकाल के सारे क्लोरीन डाल देंगे, ये हो जाएगा। So this reaction keeps going on. It forms chloromethane in start, then it forms dichloromethane, trichloromethane, and tetrachloromethane. So chlorine has substituted all of the hydrogen atoms in the structure. If there were more hydrogen atoms in the structure, it would even displace or substitute all of them. The reaction goes on something like this. First of all, CH4 is capable of reacting with chlorine, forming CH3Cl, plus it gives HCl. This CH3Cl then can continue reacting with chlorine in such a way that it can form CH2Cl2. Notice करें, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, एक क्लोरीन ऐड कर दिया, ठीक है? It's pretty easy. At every step, you are supposed to take this up, react it with chlorine, take one hydrogen out, add one chlorine in, and form a new substance. Every time you do the same, and you keep on doing that until you have displaced all of the hydrogen atoms with chlorine atoms. Hence substitution. ये क्लोरोमेथेन है, एक क्लोरीन है, इसमें दो क्लोरीन है तो डाइक्लोरोमेथेन, इसमें तीन है तो ट्राइक्लोरोमेथेन, इसमें चार है टेट्राक्लोरोमेथेन. I think the naming is pretty easy. Tetra means 4, chloro chlorine को represent करता है, meth एक कार्बन एटम को represent करता है, in single bonding को represent करता है, which this structure also shows. Are we good? Yes, sir. Okay. Substitution reactions are actually good. ये alkanes के साथ react करके आपके पास halogenated alkanes form करते हैं. Halogenated alkanes are the type of alkanes which have halogens instead of some hydrogen atoms. Trichloromethane या chloroform एक early anesthetic है. इसकी डोज तो पेशेंट को बड़े आराम से किल कर सकती थी क्योंकि एक्चुअल डोज और हायर डोज में बहुत थोड़ा फर्क था. एनेस्थेटिक्स ऐसे हम केमिकल्स होते हैं जो पेशेंट को अनकॉन्शियस किक कर देते हैं. अनकॉन्शियस करने के बाद we can easily perform a surgery on them. एनेस्थेटिक्स जैसा कि क्लोरोफॉर्म है वो लिटरली मिलीग्राम्स में ड्रॉप्स पे यूज होता था और एक ड्रॉप से भी फर्क पड़ जाता था. एक ड्रॉप ज्यादा होने से पेशेंट मर जाएगा, एक ड्रॉप कम होने से बेहोश नहीं होगा और एग्जैक्ट अमाउंट से बेहोश हो जाएगा. क्लोरोफॉर्म की यूसेज बहुत डिफिकल्ट थी. It was very easy to make mistakes. We needed something else. Substituted alkanes या जिन्हें मैं halogenated alkanes कह रहा हूँ, उनकी फर्दर डिस्कवरी से हमें अंदाजा हुआ कि बहुत सारे उनमें से अच्छे एनेस्थेटिक्स होते हैं. हेलोथेन 1956 में एक बहुत अच्छा एनेस्थेटिक था. The formula is CF3CHBrCl. You can take a look. It has 3 fluorine atoms, 1 chlorine and 1 bromine atom. This is the structure of the halothane, and we currently use as an anesthetic. आज भी अगर किसी की सर्जरी होती है तो एनेस्थीसिया में हेलोथेन यूज किया जाता है. Substituted alkanes बहुत अच्छे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं. इसमें से 1,1,1 ट्राइक्लोरोथेन एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है जो कि हम ड्राई क्लीनिंग के लिए भी यूज करते हैं. So 1, they are good anesthetics. 2, they are good organic solvents. 3, they are good dry cleaning agents. All of the halogenated alkanes. आप इन्हें substituted alkanes भी लिख सकते हैं और एक उससे ज्यादा बेहतर नाम ये है कि आपने halogenated alkanes लिखे. ऐसे alkanes जिनके अंदर हमने halogens substitution के process से add कर दिए, right? Sir, can you draw the structure of 1,1,1,1 trichloroethane? बहुत सिंपल है. सबसे पहले ये देखें कि इस सारे को छोड़ दें. ठीक, आप नोटिस करें कि एथ है. एथ का मतलब होता है 2 कार्बन एटम है. ठीक हो क्या?
एन का मतलब है वो सिंगली बॉन्डेड है, ये दोनों चीजें मैंने ड्रॉ कर दी। मैं एंड से शुरू कर रहा हूँ, नाम को स्टार्ट से नहीं शुरू कर रहा। अब ट्राइक्लोरो का मतलब है इसके ऊपर 3 क्लोरीन आएंगे, किस तरतीब से, 111, सारे एक ही कार्बन पे बना देने। सो इसको रखते हैं 1, इसी के ऊपर तीनों क्लोरीन बना देते हैं। सो ऑफ कोर्स दूसरे के ऊपर तीनों हाइड्रोजन होंगे। दिस इज 111 ट्राइक्लोरोएथेन। याद रखिए मैंने शुरू नाम के एंड से किया। पहले मैंने एथ को पिक किया क्योंकि वो कार्बन की प्रीफिक्स है, फिर एन की वजह से उनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड ड्रॉ किया, फिर देखा कि कितने क्लोरीन एटम्स हैं, ट्राई के मतलब है 3 है, फिर उनकी पोजीशन चेक की और पोजीशन के हिसाब से बनाए, और बाकी जितनी खाली जगह बचती थी उन सबको हाइड्रोजन से फिल कर दिया। That's the way I opted to draw the structure from the name. Remember the way. Okay, Make sir. sense? Yes, sir. Good, good. Any other questions? No, sir. All right. Okay, so let's clear it up and let's move on then. This actually clarifies for us all the reactions of alkanes. If we move forward, we're going to go with the chemical reactions of alkenes. Alkenes chemical reactions में addition reactions ही आते हैं। डबल बॉन्ड को ब्रेक ओपन कर देना है, ब्रेक ओपन करने का मतलब है डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है, और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हाफ्स में डिवाइड करके एक हिस्सा एक कार्बन पर और दूसरा हिस्सा दूसरे कार्बन पर ऐड कर देना है। These are addition reactions, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। उसकी एग्जांपल जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो ब्रोमिनेशन है। ब्रोमीन वाटर को अल्कीन्स में ऐड किया जाता है, ब्रोमीन वाटर डीकलराइज होता है, अपना ऑरेंज ब्राउन कलर लूज कर देता है और एक सब्स्टिट्यूटेड अल्केन फॉर्म कर देता है। इस रिएक्शन को ब्रोमीन के साथ तब भी किया जा सकता है जब ब्रोमीन को वाटर में नहीं हेक्सेन में डिसॉल्व किया गया। We can even do that reaction then. ब्रोमिनेशन हम यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अलबत्ता दो और रिएक्शन एडिशन रिएक्शन के तौर पे डिटेल में पढ़ेंगे। The first one is hydrogenation. As the name suggests, it's addition of hydrogen. डबल बॉन्ड को दोबारा ब्रेक ओपन करेंगे, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे और उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। ठीक, ये हम कैसे ऐड करते हैं? There are certain set of conditions. We can do that in under 150 to 300 degree centigrade temperature while using nickel as a catalyst. दोनों गैसेस को हीट अप करके निकल के ऊपर से पास किया जाता है, and an alkene, this one is ethene, is converted into an alkane. That's the way we can convert an alkane into an alkene. Are we good? Yes, sir. Now comes the industrial usage. In industry, hydrogenation is a pretty common reaction in the manufacturing of margarine from vegetable oils. Let me clarify. Butter comes from dairy, I mean milk, right? But if we take vegetable oils, the cooking oils we usually use every day, soybean, sunflower, linseed, corn seed, corn, and there are many other examples. Vegetables oils, if are hydrogenated, are converted into margarine. There are many big common names, market names for margarine, such as Blue Band, right? But let me tell you, margarines are not good for health. Margarine कम इस्तेमाल करना चाहिए. They can cause problems, right? Moving on, they are going to consider vegetable oils and their interests. Vegetable oils may come from corn oil, sunflower oil. Many of them are edibles. They contain long-chain fatty acid, organic acids, means carboxylic acids, which we are supposed to study further by the end of this chapter. Sometimes they even contain double bonds. If they have more than one double bond in their structure, we call them polyunsaturated molecule. Sunflower oil is rich in this. Melting point is relatively low and the oil remains liquid at room temperature. However, if we hydrogenate some of the double bonds and not all of it, we can convert it into a solid, which is actually spreadable. We call it margarine. Animal fats tend to be more saturated than vegetable oils and fats. Animal fats and cream can be made into butter. Now, doctors, many of them actually believe that unsaturated fats are healthier than saturated ones. तो margarine अब doctors believe करते हैं कि इतना healthy नहीं है, इसलिए margarines को हम partially unsaturated रहने देते हैं. सारे double bonds को break open करके hydrogenate नहीं करते.
ठीक है। ऑलिव ऑयल डिस्टिंक्टिव है, इसके अंदर हाई कंटेंट ऑलिक एसिड का है जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी मोनो मींस इसके अंदर सिर्फ एक डबल बॉन्ड है पूरे के अंदर। और ऑलिव ऑयल इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एडिबल ऑयल अराउंड द प्लैनेट। आज भी कहा जाता है कि अगर आपका खाना ऑलिव ऑयल में पका है तो वो सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डबल बॉन्ड्स जो है वो बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन है, मोनो अनसैचुरेटेड। The last of our reaction is hydration. Hydration means addition of water. Water, when we add to alkenes, is not done in this case of water, it's actually done in the form of steam. That's why this G is written next to it. अगर water के आगे L लिखा हो, that means it's in liquid state. G लिखा हो, that means it's steam. S लिखा हो, that means it's ice. ठीक है? At 300 degrees centigrade and 60 atmospheric of pressure, we can convert it into an alcohol. ये हाई प्योरिटी का एथनॉल देता है। रिमेंबर, यहाँ पे जो भी अल्कीन का प्रीफिक्स होगा, अल्कोहल का प्रीफिक्स भी वैसा ही रहेगा। अगर इथीन है तो एथनॉल बनेगा, प्रोपीन होगा तो क्या बनेगा? प्रोपेनॉल, ब्यूटीन होगा तो ब्यूटेनॉल, the list goes on. However, we also use a catalyst that is phosphoric acid. Phosphoric acid is actually liquid or solution. What we do is that we used immobilized phosphoric acid. The acid is absorbed at the surface, hence the word adsorbed. Absorb कहते हैं जब all the way penetrate कर जाए, absorb हो जाए. However, अगर सिर्फ surface तक limited हो और सिर्फ surface पे absorb हो तो हम absorb नहीं बल्कि adsorb word use करते हैं. Absorb और adsorb दो different words हैं. They talk about the absorption level. और हम उसे सिलिका पैलेट्स के ऊपर एब्जॉर्ब करवाकर फिर यूज कर रहे हैं ताकि वो मूव ना कर सके और एक अच्छे कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करे। However, you only need to remember these three and you should be able to write the equation for any alkene higher than ethene. इसी तरह यहाँ पर भी इथीन की बजाय प्रोपीन आ जाए तो आप उसे प्रोपेन में कन्वर्ट करेंगे, ब्यूटीन आ जाए तो ब्यूटेन में कन्वर्ट करेंगे। Would you be able to write the equations if they change the alkene? Yes, sir. Any questions so far? No, sir.